Walaikum salam, Furman. Furman, do you want to go to Dubai as well? I thought you wanted to work here in, what do you call it, in Wabda. But I think Dubai is better option if you can get a job there. Um, because you asked about the interview questions, that's why I'm asking. अपने इंटरव्यू क्वेश्चंस का बोला ना इस पूछा इसलिए मैंने कहा कि मैं वो कर दूं. Um, okay, so I think someone else messaged me. They are going to join soon. वो भी ज्वाइन कर लेंगे and then we'll start. Okay. दुबई के इंटरव्यू के बारे में फरमान, the first two questions that I told you were the first question was tell me about yourself or tell us about yourself, हमें अपने बारे में बताएं, and the second question was mm, why do you want to join this company, आप इस company को क्यों join करना चाहते हैं. um, Obviously in the first question you introduce yourself, you just say your name, your qualifications, your experience, but the second question you need to talk about the company. Why do you want to join the company? Why do you want to work for them? आप वहाँ क्यों काम करना चाहते हैं उस कंपनी के लिए. You will have to speak about the company. उसके लिए आप कंपनी के बारे में थोड़ी मालूमात करेंगे और फिर उनको बताएंगे कि ये वजूहात हैं. These are some of the reasons that I want to join. Third question जो वो पूछ वो जानना चाहते हैं, they want to know what can you give to the company, what if you could benefit the company, अगर आप कंपनी को फ़ायदा पहुंचा सकते हो. तो वो ये जानना चाहते हैं कि अगर कंपनी को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हो तो वो किस सूरत में पहुंचा सकते हो. They want to know your experience actually. They want to know if you have worked similar job. Okay, okay. Mm, then we'll start from the beginning. If your friend is online, so I was saying that जब आप दुबई जाते हो, you they will ask you the first question in the interview. They will ask you, tell us about yourself. हमें अपने बारे में बताएं. Um, you can say Farman, you can say Tanveer, please send a message in the chat. Uh, okay, in the live chat. And so the first question, Tanveer, the first question they will ask you is why, sorry, they will ask you, tell me about or tell us about yourself. अगर एक बंदा हो तो वो आपसे कहेगा कि tell me about yourself, मुझे अपने बारे में बताओ. और अगर ज़्यादा होंगे तो वो कहेंगे tell us about yourself, हमें अपने बारे में बताएं. ठीक है, तो उसका जवाब ये होता है कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं. You will have to introduce yourself. इंट्रोडक्शन में पहले आप अपना नाम बताते हैं. For example, you will say, my name is Tanveer या I am Tanveer. इनमें से कोई भी बोल सकते हैं. फिर आप अपनी qualifications बताएंगे, which are your degrees, your education, अपनी education बताएंगे, and then finally and lastly you will tell them about your experience. आप अपने experience के बारे में बताएंगे फिर. ठीक है, कि मेरा कितना experience है. For example, you have 5 years experience, then you will tell them that I have been working for 5 years in the similar roles. आप ये कहेंगे, वो आपसे ये पूछते हैं कि आपने इस तरह की jobs की हैं. Have you worked you know in the similar positions in the past? क्या past में आपने इस तरह की jobs की हैं? um, so uh, and then they will also ask you about why do you want to join the company. जब भी आप किसी जॉब में इंटरेस्टेड होते हो ना, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन अ जॉब, व्हेन यू आर रियली इंटरेस्टेड, जब आप बहुत इंटरेस्टेड होते हो तो आपको जॉब मिलती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. आपको कंपनी के बारे में मालूमात करनी पड़ती है, जॉब के बारे में मालूमात करनी पड़ती है कि ये जॉब क्या है और कंपनी कौन सी कंपनी है. एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर योर आंसर्स. आपको इन सवालात के आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं.
लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आप वजूहात वो बताएंगे जो कंपनी से पता चलेंगी आपको। फॉर एग्जांपल उस दिन मैंने मिसाल दी थी, इफ़ यू वांट टू जॉइन एमिरेट्स एयरलाइन, आप अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, आप इस कंपनी के लिए क्यों जॉब करना चाहते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, एक बेहतरीन एयरलाइन है दुनिया की। आप एक ये वजह बता सकते हैं। यू कुड ऑल्सो से दे प्रोवाइड वेरी गुड सर्विसेज, बहुत अच्छी सर्विसेज देती हैं। एम्प्लॉयज़ को फ्री टिकट्स वगैरह भी देती हैं, तनख्वाहें बहुत अच्छी होती हैं। सो यू नो देयर आर मेनी रीजंस। आप दो तीन वजूहत बता दें और कह दें कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आई वांट टू जॉइन एमिरेट्स एयरलाइंस। एंड द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जॉब क्यों चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू वर्क, यू नो व्हाई डू यू वांट टू गेट दिस जॉब, व्हाई शुड वी गिव यू दिस जॉब। वो आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं, व्हाई शुड वी गिव यू दिस जॉब, हम आपको ये जॉब क्यों दें। एंड यू वुड से दैट here in this is job, अब आपने जॉब की है पुरानी, इट्स गुड, अगर नई भी की है फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। You will tell them okay, I have worked in the exact same roles before. For example, आप कह सकते हैं पाकिस्तान में मैंने बिल्कुल इस तरह की जॉब्स में काम किया है। If you are working, for example, you apply to a company to work there as a driver. आप अगर एज अ ड्राइवर जाते हैं, काम अप्लाई करते हैं, तो आप कहेंगे उसको कि मैंने ड्राइविंग की जॉब्स बहुत की हैं, टैक्सी भी चलाई, ये चलाए वो चलाए, बिकॉज दे कैन नॉट चेक। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप कहें कि मैंने ऑफिस में कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में जॉब्स की हैं। सिमिलरली यू कुड से, और आप उस जॉब के बारे में ये भी मालूमात करेंगे कि इस जॉब की ड्यूटीज़ क्या हैं, ताकि वो आपसे जब पूछे कि यार अच्छा इस जॉब में आप क्या करते रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग while you were working as a driver or as a waiter or as a clerk, then you will tell them those duties, आप वो ड्यूटीज़ बताएंगे उनको कि मैं ये काम किया है, ठीक है। um, Welcome, Ismail. Thank you. And so these are the top three questions. Tell us about yourself means your introduction. Second is why do you want to join this company? And the third is why do you want to work in this job? Why should we give you this job? ये job क्यों करना चाहते हैं? Okay. Now let's get back to English. We should study. We should learn some English as well. So before leaving, I was saying that whenever we meet someone, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम ग्रीटिंग्स करते हैं। ग्रीटिंग्स मीन्स सलाम दुआ। फॉर अस मुस्लिम्स, मुसलमान हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये कहते हैं, लेकिन इन इंग्लिश दे हैव डिफरेंट ग्रीटिंग्स, डिफरेंट सलाम दुआ है। जैसे दो टाइप के, एक फॉर्मल है, फॉर्मल मीन्स योर कोलीग्स, अपने कंपनी में जो आपके साथ काम करते हैं लोग, उनसे, या फिर किसी मतलब ऐसे बंदे से जिसको आप जानते नहीं हैं, उनके साथ जब हम ग्रीटिंग्स करते हैं तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स करते हैं। लेकिन जब हम दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ इस तरह करते हैं तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स होती है। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में व्हेन वी डू इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, वी जस्ट से हेलो, हाय, हे, और वी से ग्रीटिंग्स, और वी से हाउडी। एंड व्हेन वी डू फॉर्मल ग्रीटिंग्स, जब हम फॉर्मल ग्रीटिंग कहते हैं, लगाते हैं, करते हैं, तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स में वी यूज गुड, और एंड आफ्टर गुड, गुड के बाद हम क्या करते हैं, वी जस्ट यूज द टाइम ऑफ डे, दिन का जो टाइम होता है वो इस्तेमाल करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। पता है, डू यू गाइस नो कि गुड नाइट जो है ये फॉर्मल ग्रीटिंग है। मतलब आप बॉस को या किसी को भी ऑफिस से जाते वक्त शाम को कह सकते हैं, अगर लेट हो गया है टाइम, आप कह सकते हैं गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट का नॉर्मल ये तब इस्तेमाल होता है जब आप सोने जा रहे हो, बट दिस कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फॉर्मल ग्रीटिंग, एज अ फॉर्मल ग्रीटिंग भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो
these three are now the one good morning, good afternoon, good evening, sometimes good night. These are informal greetings, job colleagues or boss. उस दिन आई थिंक फ्यू डेज अगो वी स्टडीड, हमने ये पढ़ा था कि हम खुद को इंट्रोड्यूस कैसे कराते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स, जब हम अपने बारे में कहते हैं तो ऑब्वियसली अगर कोई हमें नहीं जानता, वी से द फर्स्ट थिंग वी से अबाउट आवरसेल्व्स इज आवर नेम. तो हम अपने बारे में सबसे पहली चीज़ बताते हैं, दैट इज़ आवर नेम. वी से आई एम फरहद और माय नेम इज़ फरहद. And then after that we do if we are meeting someone new, अगर हम किसी नए बंदे से मिल रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, nice to meet you. Nice to meet you. Or we can also say uh, pleased to meet you. Nice to meet you or pleased to meet you. After we tell our name, for example, अगर जैसे फरमान, यू हैव योर फ्रेंड तनवीर है, आपका दोस्त तनवीर भी है, तो ये जो है इसके साथ इंट्रोडक्शन करने का एक फॉर्मल तरीका भी है. फॉर एग्जांपल, you should have introduced him like this. In English you would say, sir, please meet my friend Tanveer. Sir, meet my friend Tanveer. मेरे दोस्त तनवीर से मिलिए. दिस इज़ हाउ यू इंट्रोड्यूस समवन एल्स. जब आप अपनी इंट्रोडक्शन करते हैं तो फिर तो आप अपना हाथ मिला के अपना नाम वगैरह बोलते हैं. बट व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग समवन एल्स, अगर आपके पास साथ कोई दूसरा और है, मतलब आपका दोस्त है, कुलीग है, जो भी है, आप उसे किसी से मिलवाते हैं, यू से प्लीज़ मीट माई फ्रेंड, और प्लीज़ मीट, उसके बाद उसका नाम बोलते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस तनवीर, you would say please meet Tanveer, और sir please meet Tanveer. इसका मतलब है सर तनवीर से मिलिए. तो इस तरह आप इंट्रोडक्शन कराते हैं. ओके. जब आपको किसी का नाम याद नहीं होता, आप किसी से मिलते हैं फॉर एग्जांपल, और आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा, देन व्हाट डू यू से? फिर आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप? यू वुड से सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम. सॉरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज आप माजरत करते हैं कि मुझे आपका नाम याद नहीं है. सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम, और सॉरी. और उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं, यू आर मतलब आप हो. व्हेन यू से सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम. ओके. So when you are introducing someone, okay Tanveer, thanks. um, so when you are introducing someone, you would say please meet my friend, or please meet Tanveer. प्लीज़ तनवीर से मिलिए. और जब आप किसी का नाम भूल गए हो तो आप कह सकते हैं सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, और सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम. दोनों बोल सकते हैं. ठीक है. सॉरी आई डोंट रिमेंबर योर नेम, या सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम. उसके बाद आप बोले यू आर, आप हो. उसके बाद वो अपना नाम बताएगा. ठीक है, कि मैं ये हूँ. ठीक है. नाउ फाइनली वी वुड गो टू स्मॉल टॉक. इंग्लिश में एक चीज़ है जिसे स्मॉल टॉक कहते हैं. तनवीर, यू शुड से माय नेम इज़ तनवीर, या आई एम तनवीर. ओके, आई एम तनवीर. ओके, थैंक यू तनवीर. मेरा नाम फरहद है. माय नेम इज़ फरहद. नाइस टू मीट यू. एंड you would say that what I was saying, इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट है स्मॉल टॉक. जब भी आप किसी से ग्रीटिंग करते हैं, व्हेन यू ग्रीट समवन, जब आपकी सलाम दुआ होती है किसी के साथ, तो उसके बाद आप कहते हैं क्या कहते हैं आप, स्मॉल टॉक करते हैं. व्हाट इज स्मॉल टॉक? Small talk is when you ask someone this very basic question, how are you?
जब आप किसी पूछते हैं ना हाउ आर यू, सलाम दुआ के बाद ये लाजमी पूछा जाता है। और इसको हाउ आर यू को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बोल सकते हैं। ओके, नॉर्मली वी से हाउ आर यू, बट वी कैन से हाउ आर यू, वी कैन से हाउ आर यू डूइंग, वी कैन से हाउ इज़ इट गोइंग, वी कैन से हाउ आर थिंग्स, वी कैन से व्हाट्सअप। जब जो व्हाट्सअप है ना, ये ये तो व्हाट्सएप है जो हम यूज़ करते हैं मैसेजेस के लिए। In English, when we ask someone how are you, we can say what's up. That's WHATS, what's up, up. What's up का मतलब है क्या हो रहा है, कैसे हो। ओके, सो लेकिन ये इनफॉर्मल है। हाउ इज़ इट गोइंग इनफॉर्मल है, हाउ आर थिंग्स इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब ये होता है जो आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ यूज़ होता है। बिकॉज व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, विद योर family, you don't care, you care about the language obviously, but you don't have that kind of respect जो हम इज्जत से बात करते हैं ना लोगों के साथ। आप किसी को मतलब बहुत फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। इंग्लिश में भी इसी तरह, जब आप व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर बॉस, जब आप अपने बॉस से बात कर रहे हो या किसी और बंदे से बात कर रहे हो, अनजान बंदे से, वी टॉक विद दैट टोन, वी डोंट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज। हम इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते फिर। तो ये इनफॉर्मल चीज़ें हैं। हाउ आर यू जो है ये दोनों चीज़ों में यूज़ होता है, फॉर्मल भी दोस्तों के साथ भी, और कोलीग्स और बॉस के साथ भी, या ऐसे लोगों के साथ जिनको आप नहीं जानते। सो बट देयर आर डिफरेंट वेज। हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर थिंग्स, हाउ इज़ इट गोइंग, व्हाट्सअप। ये सारी चीज़ों का इन सब का मतलब है हाउ आर यू। ओके, नाउ to answer this question, uh, we use different language. Tanveer, this will be asked also. This will be asked in interview. Yeah, this will be a part of your interview as well. ये आपके interview का हिस्सा भी होगा, because when you meet someone for the interview, जब आप interview के लिए किसी से मिलते हैं, they will ask you how are you. If they don't ask you, अगर वो ना पूछे तो आप पूछ ले how are you, and then there are different ways to answer it. इसका जवाब देने के मुख्तलिफ तरीके हैं। For example, you could say I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. या आप कह सकते हैं I'm fine, how are you? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I'm fine, how are you? आप कैसे हैं? और you could say fine, thanks, and yourself? Fine, आप कहते हैं fine मतलब मैं ठीक हूँ, thanks शुक्रिया, yourself आप खुद मतलब आप खुद कैसे हैं? Okay, so you would say I'm fine, um, thanks, yourself। दिन दोनों चीज़ों का yourself होते हैं, उसका मतलब है I'm fine, you say, Farman. This is not when someone asks you how are you, you don't say I'm fine, you say. ये बहुत मतलब ये अजीब लगता है। You will say I'm fine, how are you? या आप बोलेंगे I'm fine, yourself। yourself मतलब आप खुद कैसे हैं। ओके, वालेकुम सलाम खुश नसीब। I'm well, alhamdulillah, thank you। um, it seems like everyone has been having that problem, I mean the internet problem। um, all right, okay। um, खुश नसीब कह रहा है तनवीर और फरमान के नेट की वजह से शायद उनको आवाज़ सही नहीं आ रही। आप लोगों को आवाज़ सही आ रही? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई मीन कोई ज़्यादा शोर वोर तो नहीं आ रहा? Uh, where do you live, Khosh Nasib? Are you in KDA or in Bazaar, or where exactly are you? Maybe you are in a place where the phone tower is far away from you and you don't get very good signals, probably. Okay, so Farman, when we answer this question, how are you? We say I am fine, thank you. How are you? या इस तरह बोलते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू,
शुक्रिया, हाउ आर यू, आप खुद कैसे हैं? या अगर आप शॉर्ट बोलना चाहते हैं, यू विल से फाइन और फाइन, थैंक यू, योरसेल्फ, या फाइन योरसेल्फ. ओके, don't say I'm fine, you say. Okay, this doesn't feel right. ये अच्छा नहीं लगता. I mean, ग्रामेटिकली ये ठीक है, लेकिन no one says this. कोई नहीं बोलता इस तरह, ठीक है? So uh, this was the small talk I'm talking about. Um, okay. Okay, good. So probably it's, I mean, the internet connection for Khush Nasib isn't working. Uh, okay, so when we meet someone, we do greetings. Um, Tanveer, when you go to that interview, जब आप interview में जाएं, तो you will say good morning if it's morning. अगर 12 बजे से पहले time हो ना, uh, if it's before 12 o'clock, अगर 12 बजे से पहले हो टाइम, you will say good morning. अगर 12 बजे के बाद हो टाइम, तो आप कहें good afternoon. ओके, 12 बजे जो है ये नून होता है, 12 o'clock इज नून. सो एनीथिंग आफ्टर 12, 12 बजे के बाद, 12 बजे को नून कहते हैं ना, तो 12 बजे के बाद जो भी टाइम है उसको आफ्टरनून कहते हैं, मतलब नून के बाद. सो अगर आपका इंटरव्यू जो है 12 के बाद हो, तो यू विल से गुड आफ्टरनून. और अगर इवनिंग हो तो आप गुड इवनिंग, मतलब शाम हो तो गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं. Uh, so when you go to the interview, you will say good morning or good afternoon or good evening. Uh, Hopefully it will be good morning होगा शायद. And then you will introduce yourself. अगर आप for example in Dubai, when you say to different companies, अब दुबई में जब मुख्तलिफ companies में जाते हैं, you introduce yourself first. आप reception पे जाते हैं, क्योंकि जो इंटरव्यू लेता है आपका बंदा, वो पीछे कहीं बैठा होता है ऑफिस में. आप रिसेप्शन पे जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट जो सबसे पहले आपसे मिलता है या मिलती है, उसको आप अपना नाम बताएंगे. यू विल से आई एम तनवीर, माय नेम इज तनवीर, तनवीर, या आई एम तनवीर, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ फॉर एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के लिए. आई एम हेयर फॉर एन इंटरव्यू, इस तरह बोलेंगे. आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर यू एज वेल. फॉर एग्जाम्पल आप बोले गुड मॉर्निंग. आई एम तनवीर, आई एम हेयर for an interview. This is what you'll say. Good morning, I'm Tanveer. Good morning, I'm Tanveer. I'm here for an interview. मैं यहाँ interview के लिए हूँ. Okay, and then uh, they will give you a seat. You will sit down and wait for the interview. And once you meet the guy who is interviewing you, जब आप उस बंदे से मिलते हैं जो आपका इंटरव्यू कर रहा है, to him you will also say good morning. जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको भी कहें good morning. आई एम तनवीर. जब आप शुरू में उससे हाथ मिलाए या जैसे भी मिले, आप गुड मॉर्निंग बोले और कहे आई एम तनवीर. एंड once they ask you to tell us about yourself, then you introduce yourself formally. फिर आप formally अपना खुद को introduce करते हो. Okay, so um, and then hopefully they will ask you how are you. You will also ask them how are you. Okay, um, how good is your spoken English, Tanveer? आपकी बोलचाल कैसी है इंग्लिश की? फरमान, आई एम हेयर फॉर एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के लिए. ए एन एन, एक जो होता है ना, एक तो ए होता है, एक ए एन एन होता है. आई एम हेयर फॉर एन इंटरव्यू, मेरे वाले देखिए जैसे मैंने लिखा है, आई एम हेयर फॉर एन इंटरव्यू. फरमान, आई एम गोइंग टू, इफ यू आर अवेलेबल, आई एम गोइंग टू कॉल you on WhatsApp, and I will put you on speaker.
and then we'll talk. Okay, just small talk. छोटी सी 2-3 लाइंस बोलेंगे. Even if you say wrong, say something wrong, it's okay. And then even if you say wrong, say something wrong, it's okay. And then the class will hear us as well. It will help us. It will help you to practice some. Okay. If you're free and available, I'm going to call you. Okay. Is that okay? Can I call you now? मैं ये कह रहा हूँ फरमान के कॉल करता हूँ फिर आपको स्पीकर पे डालूंगा. Okay, so you understand. Good. Walaikum salam and good evening. How are you? How are you, Farman? I'm well, thanks. Uh, have you been learning in our class? Okay. Okay, that's great. I'm glad that you are learning because at least someone is learning. Um, are you having a good day? Okay. Can you tell me what have you been doing today? मतलब आप क्या करते रहे हैं आज? Today I went to Kohat because it was in the past. So you will say today I went to Kohat. Okay. And okay, then go on. What did you do in Kohat? क्या किया आपने कोहाट में? Did you come here to buy something or for shopping or Oh, okay. You repaired your mobile phone. All right. Okay. Okay. Uh, okay. I hope you had a good trip. मुझे उम्मीद है कि आपकी ट्रिप अच्छी थी. You will say yes, it was good. how how was the weather? मौसम कैसा था? How was the weather in Kohat? It was very hot. Okay, all right. Okay, it was good talking to you. I'm gonna go back to class now. Okay, you can join the class now. Okay, inshallah, I will speak to you tomorrow again on the phone because this is good for your practice. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay, so that was Farman. I wanted to talk to him, so he could just get some practice. When you want to learn spoken English, you will have to speak. Tanveer and everyone else who is listening, जो भी सुन रहा है, if you want to be able to speak, अगर आप चाहते हैं कि आप इस काबिल हो जाएं to speak English कि आप अंग्रेजी बोलें, then you have to speak up, you have to practice speaking it. आप बोल चाल में प्रैक्टिस करेंगे, only then you will be able to speak. सिर्फ उसके बाद आप जो है वो करेंगे. Yes. And mashallah, it's improving, Farman. Your English is improving. एक बात, when you are talking, जब आप अभी बैठे हैं ना मेरे मेरे साथ, you are taking this class, तो ये प्रेजेंट है. जब भी आप अभी 11 बजे हैं, जब भी आप 10 बजे के बारे में, 9 बजे के बारे में, दिन के बारे में, कल के बारे में बात करते हैं ना, पिछला जो गुजरा हुआ कल है, yesterday, then you have to speak past. तो आप past में बात करेंगे. You will have to say I was doing this, I went to Kohat, I enjoyed my trip. You will have to speak in the past tense. Okay, inshallah. Yes, one day, inshallah, one day you will speak better than me, inshallah. I hope. And everything depends on hope. So
When Tanveer, when are you going to Dubai? When are you planning to go to Dubai? आपका क्या प्लान है? When are you going? कब जा रहे हैं आप? इसका मतलब है। Um, are you going soon, or is it going to take you some time? Inshallah. Farman, I was asking Tanveer, when is he going to Dubai? When is he planning to go to Dubai? Is he going soon? क्या वो जल्दी जा रहा है या टाइम है अभी? महीने में जाएगा, 2 महीने में? When is he planning to go? And by the way, it works fine, but when I connect it with my laptop, it doesn't work. कैमरा मुझे आज मिला, लेकिन काम भी ठीक ठाक करता है, सही है, बिल्कुल क्लियर होता है। लेकिन जब मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ तो लैपटॉप में अपना कैमरा है ना, वो नहीं खुलता, ये खुल जाता है। आई एम वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह कुछ टाइम में वो हो जाएगा। ओके, इफ ही हैज टाइम इट्स गुड, बिकॉज इट विल गिव हिम मोर टाइम टू लर्न इंशाल्लाह। तो फिर तैयारी कर लेगा। मुझे लगा कि जल्दी जाएगा तो इंशाल्लाह he will improve, inshallah he will improve his English. Okay, what we'll do is from tomorrow हम कुछ छोटे छोटे जुमले भी सीखेंगे, जो कि मैं जो वीडियोस अपलोड करता हूँ उनमें भी है। जो मेरी वीडियोस हैं फरमान, उनको भी देखा करें, उन पे कमेंट्स भी कभी कभी किया करें। मैं कमेंट्स बता दिया करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है 3 महीने बाद, ओके 3 मंथ्स बाद, देन इट्स गुड, यू हैव टाइम। 3 महीने में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, यू विल लर्न अ लॉट इंशाल्लाह। तो मैं ये कह रहा था फरमान के मैं कमेंट्स बता दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं गुड वर्क, नाइस वर्क, किसी उसमें लिखते हैं वीडियो पे। इस तरह कभी कभी कमेंट्स जब आपको टाइम मिले ना, उसमें वीडियो देख के मेरी वीडियो उस पर कमेंट्स कर लिया करें। एंड इट्स प्रीटी लेट नाउ, काफ़ी लेट हो गया है। इंशाल्लाह we'll do this class tomorrow. कल जो है we'll take the next class tomorrow, and hopefully people will join and we'll do the class from 10 to 11 p.m. Okay, sorry, yes, 10 to 11 p.m. Tomorrow night. Okay, do you guys have any questions? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? Thank you, you are welcome. इंशाल्लाह आप दोनों अगर आपने या तनवीर ने किसी ने वो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर ले। ओके, थैंक यू। और क्या कहते हैं, कल इंशाल्लाह 10 बजे फिर मुलाकात होगी। विल सी यू टुमारो एट 10। ओके, इंशाल्लाह। आई होप यू गाइस हैव अ गुड नाइट। श्योर, ओके। उस पे जो है कमेंट फिर कर लिया करें जब आपको टाइम मिले। कभी भी मतलब जब आपको टाइम मिले, ज़रूरी नहीं है कि आज या कल या परसों, हफ्ते बाद, महीने बाद, जब भी आपको टाइम मिले, आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, आप वीडियो देख लें और कमेंट कर लें। ओके, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ओके। इंशाल्लाह विल सी यू गाइस, आई विल टॉक टू यू गाइस टुमारो। ये अंग्रेजी में इस तरह बात करते हैं, बोलते हैं जब हम जाने लगे ना, तो हम कहते हैं आई विल सी यू टुमारो, मैं कल आपको देखूंगा इंशाल्लाह।
या कहते हैं आई विल टॉक टू यू टुमारो, आई विल टॉक टू यू टुमारो, मैं कल आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।